So in previous lecture, we were discuss about space complexity and time complexity. And in space complexity or time complexity, we were learn about that how we will calculate space for the algorithm, or how we will calculate for the execution time for a particular algorithm. In space complexity, we will focus on only variables, or we can say memory locations reserved by the variables. And in time complexity, we have to focus on just steps of executions. Okay, so these are the concept of space complexity and time complexity. So after that, in that way, what is the represent? Today's we will discuss about asymptotic notations. Why we discuss asymptotic notations? Because of जैसे ही हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था वी कांट कैलकुलेट 100% एग्जैक्टली, है ना, क्योंकि हम कुछ चीजें छोड़ देते हैं, जैसे जो प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी ली जाती है उसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट इज आउट ऑफ रेंज फ्रॉम आवर कैलकुलेशंस. वी कांट इंक्लूड दैट मच, बिकॉज ऑफ एक इंस्ट्रक्शन के लिए हम आइडिया नहीं लगा सकते कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए कितना स्पेस ले, है ना. तो कुछ स्पेस जो है वो वहाँ पे एक्स्ट्रा यूज किया जाता है. देन इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो देयर सम थिंग्स लाइक sometimes we can say fetching data. If there is large data, then there will be more time consumption, and exactly we don't calculate every moment in our time complexity, है ना. कहीं हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमें रिजल्ट जो देती है, कैलकुलेशन रिजल्ट देती है, वो ये मान सकते हैं कि दैट इज जस्ट नियर अबाउट, नॉट एग्जैक्ट. दैट्स व्हाई वी नीड टू asymptotic notations to represent these space complexity and time complexity. In that particular asymptotic notations, there will be some notations like omega, theta, big O notation. That type of notations we have to use here. Mainly we have to focus on three notations, and these three notations are we can say O and omega, okay, omega or theta. These three notations we have to use. Okay, so we will talk about these notations one by one, and we will also discuss some examples related to these notations. First example लिया गया, why we use the we can say notations, or what is the we can say representation of these things. So there are three kind of representations we have to take. First one is the n, second one is the n square, and third one is the log n. First one represents linear, that is n. Second one we can say exponential, that will be also n cube or n ki power 4. We can say in power form or in exponential form, we can say. And next one is the log and logarithm formats we have to use to represent time complexity or space complexity. So there will be a simple example. मैं आपको सिंपल वे में इसको समझाता हूं ताकि आप इसका सही मीनिंग जो है वो समझ सके.
There will be a 100 student in a classroom. ओके, मान लो एक क्लासरूम के अंदर 100 स्टूडेंट है एंड मैंने किसी एक स्टूडेंट को अपना पेन राइटिंग के लिए दिया है। ओके, मान लो किसी स्टूडेंट ने पेन मांगा और मैंने वो पेन एक स्टूडेंट को दे दिया। देन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ एन हमारा प्रोसेस क्या रहेगा कि गोइंग एंड आस्किंग ईच स्टूडेंट इंडिविजुअली, मैं हर एक स्टूडेंट के पास जाऊंगा और पूछूंगा मेरा पेन आपके पास है क्या। दैट इज द वे ऑफ ऑर्डर ऑफ एन, है ना। इसको हम किस प्रकार से रीड करेंगे, ऑर्डर ऑफ एन। ओके, इसको हमें रीड करना है ऑर्डर ऑफ एन। ये ऑर्डर ऑफ एन के फॉर्मेट में होगा। हर एक स्टूडेंट के पास मैं जाऊंगा और पूछूंगा कि भाई मेरा पेन आपके पास है या नहीं। Then next one is the order of n square. In order of n square, scenario is changed because of here uh, it's depend on exponentially increase or decrease. So यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए सिनेरियो क्या रहेगा, मैं फर्स्ट पर्सन के पास जाऊंगा, ठीक है, और फर्स्ट पर्सन को मैं पूछूंगा कि आपके पास मेरा पेन है, ठीक है। अगर उसके पास पेन नहीं है तो मैं उससे उसी स्टूडेंट से ये भी पूछूंगा सभी के बारे में, सभी का नाम ले लेके, क्या इसके पास है, क्या इसके पास है, क्या इसके पास है। मैं अदर 99 स्टूडेंट के बारे में भी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट से पूछूंगा। अगर वो नहीं जानता है उसके बारे में, उसको नहीं पता है कि पेन किसके पास है, देन मैं सेकंड स्टूडेंट के पास जाऊंगा और उसको पूछूंगा कि तेरे पास पेन है। अगर वो कहेगा नहीं है, देन मैं बाकी बचे हुए 99 के बारे में पूछूंगा कि इनमें से किसके पास है। अगर वो भी नहीं जानता होगा, देन आई विल गो विथ थर्ड। सो दैट विल बी द एक्सपोनेंशियल। तो 100 स्टूडेंट के लिए मुझे कितनी बार पूछना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स। ओके, अगर मैं लास्ट स्टूडेंट तक जाता हूं तो। Then next one is the log n, order of log n. Log n means there will be, we can understand, I will divide all students in two groups. It means 50 students in one group and 50 students in second group. And then I ask my pen is in which group, कौन सी ग्रुप में है, कौन सी ग्रुप में नहीं है। तो जिस ग्रुप में नहीं होगा उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा एंड जिस ग्रुप में होगा उस ग्रुप को मैं फिर 25-25 में डिवाइड कर दूंगा और फिर से पूछूंगा भाई कौन से ग्रुप में। तो अब केवल 2 इटरेशन परफॉर्म करने से मेरे पास 100 में से कितने कैंडिडेट रह गए, 25। ये मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मेरे पास लास्ट सिंगल स्टूडेंट नहीं बच जाता जिसके पास मेरा पेन। So these are the representations, order of n square and order of log n। ठीक है, यानी n के कंपैरिजन में अगर बहुत ही कम प्रोसेसिंग आपको करनी पड़ रही हो, देन log n काम में आएगा, और n टाइम्स आपको प्रोसेसिंग करनी पड़ रही हो तो आपका ऑर्डर ऑफ n आएगा, और एक्सपोनेंशियली के अंदर आपका n स्क्वायर या n क्यूब भी हो सकता है, दैट इज डिपेंड ऑन द increasing order। Why we use asymptotic notation? So I already discussed about we can never provide an exact number of define and the time required or the space required, है ना। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम एग्जैक्टली एक्चुअली कैलकुलेट नहीं कर पाते कि पर्टिकुलर एल्गोरिथम को टाइम और स्पेस कितना चाहिए। दैट्स व्हाई we need to represent using asymptotic notations।
Why it is called asymptotic? Because of these statements define the meaning of asymptotic. It deals with the behavior of the function in limits. यहाँ पे केवल फंक्शन के बिहेवियर को डील किया जाता है, उसके लिमिटेशंस के अंदर रहकर. So that's why we have to use asymptotic notations, or there will be some cases in asymptotic notations like best case, average case, and worst case. I already told about them also. Best case, it means we can say run fastest. Worst case, it means run slowest. And average case is in mid of both of them.